we as a society refuse to admit to the fact that we are human beings. वो ऐसे छुपाते हैं अपनी गलतियाँ, लेकिन दूसरों की गलतियों पे से पर्दा हटाने में उनको एक सेकंड नहीं लगता. जब भी कोई ऐसी बात होती है where people have an opportunity to pick sides, तो जिस साइड को वो पिक कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं. Nobody likes being wrong in our society. That's our problem. एक मक्खी अगर आपको आके तंग कर रही है, अपनी सारी एनर्जी उस मक्खी को मारने में तो नहीं लगाते ना. आप के कॉर्नर में कौन है वाकई आपको तब पता लगता है जब आप पे बुरा वक्त आता है. Because everybody who seems to be cheering you on, they disappear the second you have something horrible happen to you. Loneliness से डर नहीं लगता. I have spent a long time being on my own, and I have to tell you, it's one of the most scariest thing that you can ever do. मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप से दोबारा मिल रही हूँ. Now I know that I'm the kind of person who can eat alone at a table. When you walk in, we can sense that self-assurance. Divorce, yes, it's a very unpleasant word, and ये कोई खुशी की बात नहीं है. It's a horrible thing to happen to somebody, but it's not the end of the world. Staying silent is so much more difficult. Do I want to get into that gandagi with them? When you're silent, then somehow you have the last word. Lekin it's all around us. And all we have to do is just acknowledge it, recognize it. सुबह घर से निकलने से पहले अम्मी फजर पढ़ रही होती हैं. I say salam to her and वो मेरे पे पढ़ के फूंकती हैं. That is happiness for me. अगर आप खुश हैं ना अपने आप से और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो you won life. Cultivate your own happiness. Yes. आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद को खुश कर लीजिए. आपके इर्द गिर्द सब लोग खुद ही खुशी हो जाएंगे. हमारी ज़िंदगी अगर थोड़ी सी स्लो हो भी जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं. Hello and welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. Thank you for all the love and the feedback and the comments. Please keep them rolling and do subscribe to the channel. मेरी आज की मेहमान is someone who is a very dear friend. लेकिन इनके मीडिया करियर के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है कि she came, she saw and she conquered. इनका पहला ही प्ले इनको सुपर हिट यानी शोहरत की बुलंदियों पे ले गया. But I like to call her and refer to her as the queen of comebacks. Because she's taken several breaks in her life. She's reinvented and has always come back with a bang. हमारे साथ आज मौजूद हैं नवीन वकार. Hi Naveen. Hi Sidra, thank you for having me. It is a pleasure to have you here. And I'm always glad to see the things that you're up to. लेकिन सबसे बड़ी बात नवीन, तुम कैसे इंस्पायर करती हो यार सारे लोगों को. सुबह जल्दी उठ जाती हो, सुबह रेडियो शो कर लेती हो, फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग कर लेती हो. You must stay active. What's the inspiration behind it? I think it's about pretty much wanting to outdo what I've already done. You know, I set a lot of goals for myself. Okay. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ. हालांकि मुझे एक पॉइंट आ गया था ज़िंदगी में where I thought कि अब तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद ही यानी बंदा उठे. But then I was like, no, you know, I can do this. And I did because for the love of radio. So I thought, why not, you know, give this another shot. And I did. And isi tarah likewise with all the other things that I do, I set little challenges up for myself. And then I'm like, yeah, you know, I'm going to achieve that. And I do. And it just makes life a little more happy and interesting. Was being a VJ or becoming a VJ a challenge that you set yourself up to? No, not at all. I mean, it was complete accident, you know, getting into this field was an accident. And I don't know why, but I was never afraid of the camera. मुझे कभी भी कैमरे से डर नहीं लगा, ना मुझे खौफ आया. And I think that was one of the most important things that I had, you know, in my belt that I wasn't aware of. But it was just completely accidental because I started my career with radio. And from there, I transitioned on to television, and you know that was it. I was like, oh, लेकिन नवीन तुम हमेशा से different थी ना? Like if you look at even your earliest days in media, you dress different, you look different. People, you know, the piercings, I still remember the ring. Yes. That was iconic, huh? किसने कराया था? Was it a bad decision? No, it was just something that I think I was going through my punk rock grunge phase. And, you know, you've known me for a while. We were in school together. So, you know, I was going through that and I thought, how rock and roll, you know. And my parents, I asked them and they were like, Khabardar.
And I went ahead and I did it anyway. And, you know, I was like, मुझे तो करवाना है. And I always, for some reason, I don't know why, I wouldn't call it defiance, but every single time somebody told me you can't do that, that's all I wanted to do. Have you ever regretted anything that you did? Yeah, man, like so many things. But at the same time, you know, they become a lesson for you to learn. It becomes part of your personality. It shapes you and it molds you. Because अगर हम mistakes नहीं करेंगे, हम गलतियाँ नहीं करेंगे, और regret का मतलब ही यही है कि आपको अफसोस हुआ है कि आपने एक चीज़ की है. That means you learned something from it. If you don't regret things, then they don't count as mistakes, right? मुझे बताओ कि मिस्टेक्स, प्रोजेक्ट्स बड़ी मिस्टेक्स होते हैं या गलत लोगों को हाँ कह देना बड़ी मिस्टेक होती है? आई थिंक गलत लोगों को हाँ कह देना, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट टुडे, बट इफ आई गिव समबडी माई वर्ड, आई डू नॉट गो बैक ऑन इट, यू नो. एंड नाउ द पीपल वो मुँह पे मुकर जाते हैं, बट I'm not like that. Same. So every time I have said yes to something, I've had to follow through because I couldn't live with myself. You know, अब तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ गलत इंसान को कर दी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी हो, फिर आप फंस जाते हैं. So now I've started to say no without being rude, without being obnoxious about it, but just saying, letting the other person know, you know, this is something that I won't do. You know, simple as that. No is a complete answer, लेकिन पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं. लेकिन क्यों? हाँ. लेकिन क्यों? क्या मतलब है क्यों? I have my reasons. आपने एक चीज़ कही है, मुझे नहीं करनी, बात ख़त्म. But फिर वो personally उसको लगता है कि उन पे अटैक हो गया है. Then that's, you know, a whole other story. कभी कोई crazy fans, यानी आजकल तो लोग कहते हैं ना कि social media पे fans आपको contact करते हैं. But when they know that you're doing a show live, radio पे तो location भी पता है mostly लोगों को. कभी कोई stalker नुमा fan करीब आए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है. The closest thing I came to was I was at a coffee shop with a friend, and you know, somebody DM'd me a message saying, oh, you're wearing this and I can see you right now, you look so nice, and मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी. I was like, what? This is ये सही नहीं है. This is not cool. If you're a fan, if you see me somewhere, come say hi to me. Like a normal I have a horror person. story like that. मुझे याद है मैं किसी तरह कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में थी, and I wasn't even in Karachi, I was in Lahore. Yeah. तो मैं सोचो नवीन कॉफ़ी पी के या खाना खा के हम बाहर निकले हैं, and suddenly they were like ping ping ping, 2-3 notifications की जवाब आई, and somebody had DM'd me my photos from like 5 minutes ago. That's so creepy. That's creepy. Like, why would you, if you actually are a fan, you wouldn't make somebody you like or admire uncomfortable or feel unsafe. So I have to say my fans are very, very respectful. You know, I speak to them on radio. They DM me every now and then. I include those DMs on my radio show as well. So उनको पता है एक fine line है, you know, उससे आगे आप cross करेंगे तो फिर, you know, suffer the consequences for it. Tell me something. Naveen uncomfortable situations में क्या करती है? तुम लोगों को confront करती हो, तुम quietly exit कर जाती हो, या अब तो खैर तुम्हें kick boxing भी आती है? I hope I never have to use that, but I'm not a confrontational person. अच्छा. At all. I believe कि अगर किसी को आपकी बात समझनी होगी तो वो पहली बार में समझ जाएंगे या दूसरी बार में समझ जाएंगे. अगर उनको समझ नहीं आ रही तो मैं बेवकूफ़ों के साथ एक कंपटीशन नहीं स्टार्ट कर सकती. So I very quietly exit, and that's when I decide कि ठीक है, this is something now I know that इस इंसान के साथ कभी काम नहीं करना या इनको किस हद तक रखना है. You know, एक I have a boundary. If you cross that boundary, then I will not be mean to you. I will not be rude to you. I'll just, you know, very quietly step away from you, and you will stay there. You will not be allowed to enter my space anymore. Wonderful. नवीन, आज तो ये नो ब्रेनर लगता है ना कि अगर एक प्रोजेक्ट में सरमद खुर्सत उसको डायरेक्ट कर रहे हों, अतीका ओड हो, माहिरा खान, फवाद खान, but at that time you guys were all young and nobody had, you know, could have imagined कि हमसफ़र कितनी बड़ी सुपर हिट ड्रामा सीरीज़ होगी. हाँ कहते हुए क्या सोचा था? बहुत कुछ सोचा था, because it was my first play and एक negative किरदार मुझे दिया गया, and I was terrified. I didn't want to be hated for, you know, the first project that I'm taking on as far as acting is concerned.
But then I was, I spoke to Sarma, then he convinced me and he said that give her a backstory and we will make sure कि इसको हम justify करें. Whatever she's doing, we will make sure that it looks legit and it doesn't seem like she's being bad just because she wants to be bad. There has to be like a psychological trauma behind that. So I gave her a backstory. I, figured that the way she's maybe behaving like this is because she has abandonment issues. And, अशर के अंदर उसको एक ऐसा मर्द नज़र आता है जो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, as a father figure, as a brother, as somebody who's holding her world together. So that's how I started building on the character. And, eventually I said yes because I started enjoying giving her a backstory. लेकिन लोग नहीं ऐसे देखते ना, हमारे viewers, हमारी society black and white समझती है सही और गलत को. There's no room for maneuver या benefit of doubt हम नहीं देते. So do you feel we are very judgmental as a society? Absolutely. खास तौर पे इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं जिसमें the other woman or the second woman की बात हो रही हो. Yeah. I think we as a society refuse to admit to the fact that we are human beings. We make mistakes. अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ कभी वो ऐसे छुपाते हैं अपनी गलतियाँ, लेकिन दूसरों की गलतियों पे से पर्दा हटाने में उनको एक सेकंड नहीं लगता. I think I don't know what it is about people in general, but they enjoy watching somebody fall from grace. They enjoy watching people take that dive, उनको मज़ा आता है देख के. उनको अच्छा लगता है कि अगर किसी को बदनाम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो. So in that sense, yes, we are a very judgmental society. We do not hear both sides of the story. एक की कहानी सुनी, ओ बस ये तो हमें पता है क्या है, हमें पता है. आपको नहीं पता. You don't know what the other side of the coin is like. जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, उसको परखेंगे नहीं, I don't think that people even want to, और वो नहीं सोचते इस बारे में. और वो curious भी नहीं होता है. No, because they have what they wanted, right? उनको एक मसालेदार चीज़ मिल गई है. अब वो क्यों सुनेंगे? उसमें से अगर मसाला कोई निकालना चाहेगा तो why would they? अगर एक चीज़ चल पड़ी है, एक खबर उड़ चुकी है, तो उसको बार बार वही खबर पूरी दुनिया में फैलाते हैं. They're not going to stop and say कि नहीं ये खबर जो है ना ये ठीक नहीं है. That's how it is, And when you or anyone is at the receiving end of that negativity, जब जो आप जिसको किसी तरह जानते भी नहीं है, वो भी आपके बारे में एक राय रखता है, एक opinion रखता है, how do you find the strength to deal with that? Initially, it was very difficult, and I, for the longest time, could not take it. I was so sensitive, and I let things get to me, and I would cry about it. And then one day I realized, I was like, but they don't even know me. I don't know these people. They're randoms, Why would I let some random person who doesn't know me at all from anywhere, जिसका सिर्फ दिन का ये उसने सबसे बड़ा ज़िंदगी में अपने काम किया है कि उसने एक कमेंट लिख दिया या एक बकवास कर दी मेरे बारे में. And then that's how I started seeing these people who we now call trolls, or we now call just completely, I think troll is the right word. The other word I can't use. I don't think I should. But now I think I've had ample time to learn how to deal with it. I don't pay heed to it. I don't pay attention to it. For me, these people are faceless. They have zero presence in my life. So, that's how I see it. I'm like, एक मक्खी अगर आपको आके तंग कर रही है, आप अपनी सारी एनर्जी उस मक्खी को मारने में तो नहीं लगाते ना. आप यूं कर देते हैं, मक्खी भाग जाती है. So that's how I see it. I don't know if it makes sense. मगर एक बहुत छोटे से स्पैन में, at a very young and early age in your life, नवीन तुमने highest highs भी देखे. जब आपका ड्रामा जो एक पहला ड्रामा, your maiden appearance on television became a blockbuster. And then of course you've seen the vicious side of the industry as well. जब कोई किसी का नहीं होता और viewers का आपके बारे में एक negative opinion होता है, everybody is trolling you, everybody is trying to tear you apart. What has Naveen learned out of all of these experiences? Honestly, a lot. I first of all learned that
whatever goes up must come down. That's the law. It's how you hold yourself together. It's how you represent yourself when you have a downfall. Another thing I learned was that आप लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते किसी भी तरह की. I have zero expectations from people who I know. Family, of course, is a different scenario. My friends who have been with me through everything, those people I consider, उनका opinion मैं value करती हूँ. If they say something to me, it makes a difference to me. Otherwise, I don't care. Also, just the fact that the biggest lesson I think I learned was that आपके कॉर्नर में कौन है वाकई आपको तब पता लगता है जब आप पे बुरा वक्त आता है. Because everybody who seems to be cheering you on, they disappear the second you have something horrible happen to you. And I know each and every person who pretended to be very, very sweet to me and very sympathetic and, you know how it is. And today, those people are completely, it's almost as though they did nothing, they did not say anything behind my back. I mean, छोटी सी इंडस्ट्री है, आपको पता होता है कौन आपके बारे में क्या कह रहा है. So I know exactly who those people are. Is it like the cancel culture? क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है where people have an opportunity to pick sides, तो जिस साइड को वो पिक कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अगले को बुरा भला कह रहे होते हैं. Nobody likes being wrong in our society. That's our problem. हम लोग कभी अपनी गलती एडमिट नहीं करते. हमें मौत आ रही होती है ये कहते हुए कि शायद हमने गलत बोल दिया. सही. It's okay. We are human. आप अगर कोई आपने गलत चीज़ बोल भी दिया, आप अगर बैक ट्रैक कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती की बात नहीं है या कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. नवीन, फिर किस्मत कहाँ पे आती है? जैसे आपने कहा कि हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट भी देखा, लोज भी देखे. ये किस्मत का खेल होता है या तुम्हें लगता है कि किस्मत में था तो हो गया? Yeah, I do believe in that. Because I believe that there are things beyond my control. Yes. And there are things that now I've accepted कि ठीक है, ये 5 चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, बट ये जो 8 चीज़ें हैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. So I'm going to leave it up to God. I'm going to leave it up to the universe, and I'll see how it plays out. What are you lucky with? Lucky with love or lucky with money? Neither. Welcome to my club. नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए. वैसे भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन yeah, I know what you mean. Yeah, I know what you mean. सुनो, जो पैसे आते भी है ना वो मैं ऐसे स्पेंड करती हूँ कि बस अभी कुछ मैंने सब कुछ ले लेना होता है उसी वक्त. So yeah, these days, actually not these days, since the past couple of years I've been spending a lot on things that I should not be spending on. तो जब से ये कोविड की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हुआ है ना. नहीं व्हाट्स द सेल्फ जजमेंट? व्हाई नॉट? अपने लिए कमाए हैं. देखो, नहीं, that's fine, but then sometimes I buy really stupid things and I'm like, I did not need it. Why did I buy it? I wasted so much money. So now I'm sort of pulling the reins back. बस बहुत हो गया. अच्छा, and as far as love is concerned, do you still believe in love? Of course I believe in love. Yeah, I'm a hopeless romantic. That's how I am. That we can tell. तुम्हारी सुबह की playlist की वजह से. Zero shame in admitting that fact, by the way. But at the same time, there is a practical side of me. And जब आपकी पहली मोहब्बत होती है तो अकल पैदल आप निकल पड़ते हैं. दिमाग ख़राब हुआ होता है. अब थोड़ी ये वाली जो मोहब्बत जब होगी, which I'm hoping होगी, उसमें थोड़ी अकल का भी इस्तेमाल होगा. And I understand that people believe कि you cannot क्या कहना चाहिए, दिल के मामलात में दिमाग दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन I believe कि थोड़ी बहुत दखल अंदाजी जो है वो जायज़ होती है. So yeah, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ख़वातीन को, बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन को ये एक बात सिखाई जाती है कि you need to sacrifice in love. Do you believe that? Sacrifice in what context? In what sense? आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक इंडिपेंडेंट डिज़ायरेबल खातून हैं. जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर आप पे पाबंदियाँ लगाए और आपको कहे कि यार ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इफ़ यू बिलीव इन अस, इफ़ यू बिलीव इन लव, सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सैक्रिफाइस यू नीड टू मेक.
I did that. It didn't work. So it does not work. Learned it the hard way. Yeah. See, Sidra, the thing is, जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो आपको जानते बूझते आ रहा है, right? You're Sidra. You're a host. You are an amazing and intelligent woman. You're a working woman. You're independent. ये सारी चीज़ें देखते हुए एक इंसान आपको पसंद कर रहा है, right? He's falling in love with you. Why would after marriage he would want to change Sidra? Why would he change the same Sidra that he fell in love with? I think every intelligent woman is asking that question. लेकिन नवीन तुम्हें एक पैटर्न नज़र नहीं आता? हमारे यहाँ मर्द मोहब्बत नहीं करते, हमारे यहाँ उसको एक मिल्कियत की तरह देखते. They want to possess a woman. And sometimes their agency, their independence feels like a threat to them. Yeah, they do. I think it's both ways, to be quite honest. क्योंकि यहाँ मैं औरतों का भी pinpoint करूँगी कि sometimes women see the men they're marrying as a wallet. That's true. Fair enough, you know, yeah, dono, because if you're looking at men, then we must look at the women too. And yeah, I understand that kabhi kabhar certain things can make men uncomfortable. Jaise agar aapki, it's a big problem if your wife is earning more than you. If both parties are working and your wife earns more than you, it's a big problem. Because wo, you know, aapko lagta hai ki, oh my God, shayad mardangi mein kami aa gayi hai. But I know men who are happily married. You know, I've known them for a while, and they have zero, you know, problems with their wives working or their wives earning more than them. उनको लगता है कि नहीं यार, अच्छा है, शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हो रही है, हम बच्चा साथ पाल रहे हैं, हम घर साथ चला रहे हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, you know. बट वो रेशियो बहुत कम है. लेकिन ट्रिक क्वेश्चन भी तो होता है, लेट मी बी अ रिश्ता आंटी. बेटा, आप शादी के बाद काम करना चाहेंगी? Of course, मैं क्यों काम ना करूँ? मैं इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, मैंने इतने साल मेहनत की, अपना करियर बनाया, मैं क्यों वो छोड़ूं किसी के लिए? आंटी ने फौरन कहना है लड़की बहुत मुंह फट है, अभी से ये ऐसी बातें कर रही. मैं ना, और हर एक को होना चाहिए. देखें, झूठ पे आप रिश्ते नहीं बना सकते. सही. If somebody comes to me and they propose marriage and they say कि यार प्लीज़ आप ये सब छोड़ दें तो बस हम आपको दुनिया दे देंगे, और मैं कहूँ कि हाँ, मैं उस वक्त हाँ कर दूँ और बाद में जाके मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो काम करना है, वो फिर मेरी गलती होगी. सही. So I would rather tell the person in the first meeting कि नहीं, this is part of my life, it's part of the package. What are you now looking for in a man? Somebody who is self-assured. Somebody who knows how to respect women, somebody who takes me for who I am. Because I spent the larger part of my life trying to become somebody that I wasn't. And वो कहते हैं ना कि आप प्यार में सब कुछ जायज़ होता है और आप अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं, फलाना नहीं. आप तब्दीली अपने अंदर उस वक्त लाते हैं जब आपको पता होता है कि आपको लानी है. किसी के कहने से आप चेंज नहीं होंगे, किसी के भी कहने से कोई चेंज नहीं होता. So now the me who I have now become, he has to accept that, the good with the bad with the ugly. So if he has the ability to tackle that, then dude, you know, that's it. So you had to completely scratch away the ideal man that you probably had in your 20s. Yeah. और अब वो बहुत मुख्तलिफ दिखता है. अब तो जो है जहन में तुम्हारा sketch है. Yeah. It's a self-assured man who's kind, who's yeah, enabling. somebody who is, he knows who he is, and he wants to add to my life. Look, Sidra, I come from a very, very independent school of thought as far as my parents are concerned. उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया. मैं अपना, मेरे पास इस वक्त ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ. If I'm allowing a man to enter my life, what is he bringing to the table? Yes. You know? I already have a great life. Yeah, what आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में? आप प्यार ऐड कर रहे हैं, आप सुकून ऐड कर रहे हैं, आप खुशी ऐड कर रहे हैं, तो that's great. But if you're not adding anything to my life, then I don't need you. You know, for me, a relationship has become a want. It's not a need. I don't need somebody in my life. And the I right want somebody. relationship. Yeah, of course. Okay. And I'm a very patient person in that regard. लेकिन नवीन, loneliness से डर नहीं लगता? नहीं. I have spent a long time being on my own.
And I have to tell you, it's one of the most scariest thing that you can ever do. But after a certain period of time, you get used to it. And it's almost like you rediscover who you are. And I discovered so many things about myself. मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप से दोबारा मिल रही हूँ. And it's been amazing, you know. It's been amazing since then, because now I know that I'm the kind of person who can eat alone at a table. And it's palpable. तुम्हें पता है तुम्हारी energy, the person, the persona, the presence has entirely transformed. And it's just not like a visible transformation ke, oh, you're more active and you're lean or muscular. I'm talking about when you walk in, we can sense that self-assurance. Yeah. And that's the same quality that you're looking for. जैसे वो कहते हैं ना, law of attraction में आप ये नहीं कि आप बैठे हैं, wish करें, affirmations करें. You have to be the energy that you attract. And I'm sure the right person is probably stuck in a traffic jam. Probably. बड़ा लंबा हो गया. कराची में वैसे traffic ज़्यादा होती है. Oh my God, don't even get me started. Getting here was crazy. But tell me something. जब हम बात करते हैं divorce की, divorce is portrayed in a certain light in our dramas. How comfortable are you with the, you know, कि हम जो stereotypical अंदाज में कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लड़की रो रही है, तरले मिन्नतें कर रही है, please मुझे तलाक ना दें. It's very, very triggering to me, honestly. It is. It's horrifying, because I wouldn't blame the girl because she's been raised to believe that. I would blame the parents. माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं जब वो छोटे होते हैं कि बेटा इतना ज़िंदगी में कभी ना गिरना कि तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहने के लिए. सो आई ब्लेम द पेरेंट्स. आई थिंक कि डिवोर्स, येस, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट वर्ड एंड ये कोई खुशी की बात नहीं है. इट्स अ हॉरिबल थिंग टू हैपन टू समबडी, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू नो. आई थिंक अब ज़माना बहुत बदल गया है. हाँ, पहले तो यानी मरता छोड़ जाते थे लड़की को, रहो ससुराल में, तलाक लेके नहीं आना, चाहे मर जाओ. हाउ कैन यू डू दैट टू समबडी आपने जिनको पैदा किया है? आई बिलीव नाउ डिवोर्स इज़ नॉट सच अ बिग थिंग. या यू मोर्न इट. अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जिसमें आपको ज़िल्लत उठानी पड़ रही है और आपको मार खानी पड़ रही है या आपको इज्जत नहीं मिल रही, why would you want to continue living that life? आप अलग हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें. अगर आपके माँ बाप आपको नहीं रख रहे, कोई बात नहीं. I believe God has a plan for all of us. अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमारे साथ होगा, you know. So अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी मुश्किल एक चीज़ से गुजारा है तो उसने आगे आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा होगा. So I think women need to understand that they no longer need to cry about all these things. और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो चल ही शादी और तलाकों पे रही है. सही. You know, every second story is that. And I think that it's time we started reinventing, you know, and reassessing कि हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को. ज़हन में क्या क्या चलता है उस वक्त जब एक इंसान एक फाइनल, बिकॉज आई फील कि चाहे कोई रिलेशनशिप कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब आप फाइनली व्हेन यू पुलिंग द प्लग ऑन इट, देयर इज सो मच दैट गोज ऑन. आई मीन इतना नॉस्टैल्जिया, देयर इज सो मच हिस्ट्री, देयर इज सो मच इमोशनल इन्वेस्टमेंट. इंसान वो डिसीजन कैसे लेता है? और उस वक्त यानी सो मेनी पीपल हु माइट बी वॉचिंग दिस राइट नाउ मे बी इन वेरी टॉक्सिक सिचुएशंस. सो व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल in your opinion? I have to say that my parents in that regard, they were the ones who stepped up. And they asked me, they were like, tumhe isi tarah rehna hai sari zindagi? Is this how you picture your life for the next 40, 50, 60 years? And I realized that, you know, no, this is a very ugly place to be in. I didn't want to be in that space anymore. And it's so difficult. Like you said, pulling the plug and making that final decision, बहुत दर्द होता है. आप रोते हैं, आप you know, आपको लगता है कि बस आपको सांस नहीं आ रही है और आप कल का आप जब सोने जाते हो तो आपको लगता है कि बस अब मेरी आंखें ना खुलें दोबारा. But it's life. अल्लाह ने हमें बनाया इस तरह है कि He only puts us through what we can actually bear and get through. तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि वो एक अच्छी स्पेस नहीं है और आप अपना माइंड बना लें, हिम्मत अल्लाह देता है. यू नो, आई बिलीव, बिकॉज मुझे हिम्मत इसी तरह मिली.
I thought that, oh my God, I had left work. मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया था. I was sitting home and now my life is over. Da, 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 da. And, you know, my parents pushed me and they were like, नहीं, क्यों ज़िंदगी ख़त्म हुई? कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई. सूरज उसी तरह निकल रहा है बाहर. You know, people are walking by. Everything is going on. Life goes on, you know. So don't think that. And they helped me get back up again, you know. So, and I did. And I was like, मुझे उठाने कोई नहीं आ रहा. अगर मैं गिरी हूँ तो मुझे खुद उठना पड़ेगा. Because honestly, Sidra, by the end of the day, apart from your parents, I don't think anybody has the time to sit and आपके ज़ख्मों पर मरहम रखे and all of that. You have to do it yourself. और काफ़ी हद तक आप बहुत सारी बातें कह भी नहीं सकते. मैं कहती हूँ even when your parents and your best of friends या आपके बहन भाई आपके इर्द गिर्द हों, जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं ना, काफ़ी हद तक आपने अकेले गुजरना होता है. एंड यू नो दैट इज़ वाई आई थिंक आई वेंट थ्रू ए पीरियड इन माई लाइफ जब मुझे 1 साल के लिए मैंने टीवी से हर चीज़ से ब्रेक लिया था. एंड आई हैड एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू टॉकिंग अबाउट, डाउट्स कि जी इतना लंबा ब्रेक हो गया है, विल आई फाइंड माई वे बैक इन, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वुड दैट बी. एंड सबसे बढ़कर ये कि जब आपको इतना बड़ा धचका लगा होता है, to come out and face the people again. Was that difficult, Naveen? It was very difficult. It was scary. Because होता ये है कि कुछ लोगों को तो आपको face करना ही नहीं पड़ता. Because वो faceless होते हैं, वो सिर्फ आवाज़ें होती हैं. Yeah. Then there are people who you know for a fact कि उन्होंने आपके बारे में क्या क्या बोला है और आपको किस तरह undercut करने की कोशिश की है और आपको गिराने की कोशिश की है. Those are the people, जब आप उनसे नज़रें मिला के दोबारा खड़े होने के बाद नज़रें मिलाते हैं ना उनसे, at that point you have to remind yourself that this is it. This is how it's always going to be. They're going to be, when I walk into a room, there are going to be people who don't like me. There are going to be people who hate me. There are going to be people who like me. And it's okay. It's not my problem. मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, not because you're my dear friend and I've known you forever. मुझे हमेशा लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा हथियार आपका ग्रेसफुल साइलेंस होता है. एंड आई थिंक यू कैरी दैट विद utmost grace and I must compliment ये. और ये आसान नहीं हो सकता जब आप ना सिर्फ फेसलेस लोगों की बातें सुन रहे हैं, टू एक्चुअली हैव द ग्रेस एंड द करेज कि यार मुझे कुछ कहना ही नहीं है. ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई नवीन? You know, this kind of strength, staying silent is so much more difficult than just saying everything. Yeah. जब आपको खामोशी इख्तियार करनी, जब आप एक अपना डिसीजन ले लेते हैं ज़िंदगी में कि मैंने अब नहीं बोलना इस चीज़ के बारे में और मैं कुछ नहीं बोलूँ. It was something that I promised myself. Because बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे. And I could see it. I could hear it happening. I could see it with my eyes. And I was like, do I want to get into that gandagi with them? क्या मैं ये कर सकती हूँ? Am I that person? And I realized, no, I cannot. So I decided to not say a single thing. I was like, no, I will be quiet. And my silence is going to get me through this. And alhamdulillah, it did. You know, I'm so glad that I made that decision at that point in time. Because आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, आप लोगों के साथ, if you get into, you know, a mud throwing, fight, yeah, you also get आप dirty. खुद भी गंदे होते हैं. और सबसे important बात ये होती है कि when you are silent, then somehow you have the last word, like you do. Like look at all the people who had narratives and issues and perspectives. Where are they now? तो आप उस एंगल से चीज़ों को देखते हैं. But tell me something, Naveen, what's next for you? I solemnly believe, और मुझे लगता है कि अब ये कॉइन कर देना चाहिए कि I see Naveen as the queen of comebacks. तो season 2 has been so interesting. Season 3 में क्या होने वाला है नवीन? Season 3 में I'm hoping to once again reinvent myself. Yes. I'm always looking for opportunities, creative opportunities to sort of, you know, get into. And I made a transition back to radio after 10 years, you know. Thank God for that. Yeah. Our mornings are so much better because of it. Thank you. And I'm doing things that genuinely make me happy. You know, be it radio, be it waking up in the morning and coming here, and for 3 hours I'm just talking to people and, you know, spreading as much love and joy and positivity as I can. Maybe in the near future, I would like to go back to college.
Super. You know, I would like to get my degree. So I have all these options. I would like to be my own boss someday, you know, as far as my professional life is concerned. Maybe I'll become a writer. So I keep on exploring these different things because, I mean, that is what life is about, right? And I think learning and progressing. Absolutely. And we need that verve in us कि हमें लगे कि वाकई यार जो आप कहते हैं ना कि टीनेजर्स मुनफरिद कैसे होते हैं या 20s में आप क्या सोचते हैं, यू एक्चुअली थिंक द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एंड डिड यू नोटिस दैट इन नवीन्स वॉइस कि उन्होंने कहा कि शायद मैं राइटर बन जाऊँ, शायद मैं कॉलेज वापस चली जाऊँ. तो ये पॉसिबिलिटी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है. सिद्रा, अगर आप अपनी सोच को मार देंगे ना, तो फिर जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल. थिंक बिग. आप बड़ा सोचेंगे तो बेबी स्टेप्स लेना शुरू करेंगे ना. तो मैंने ये सोचा हुआ है कि हाँ, I think I can do anything I want. लेकिन मैं थोड़ी सी क्योंकि लेज़ी भी हूँ, मैं प्रेप में इतना मेरा वक्त निकल जाता है, सोच में इतना गुजर जाता है कि मैं कहती हूँ कि ठीक है, maybe this year 2024 I will pick one of these things and I'll work on it. I love the fact that you said, I only do things that make me happy. मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतनी डार्कनेस, इतने शैडोज़, लोगों की नेगेटिविटी देखने के बाद कई लोगों में बड़ा एक तब्दीली जो आती है, वो कहते हैं कि यार हैप्पीनेस इज़ ओवररेटेड क्योंकि लास्टिंग नहीं होती. तो तुम्हें हैप्पीनेस की क्या मायने है तुम्हारी नज़र में? देखिए, खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ढूंढने निकल सकते हैं. सही. खुशी आपके अंदर होती है. And for me, happiness is going home and having my dogs run to me and, you know, their tails wagging and मुझे उनको देख के जो खुशी मिलती है. या मैं अपनी सुबह घर से निकलने से पहले अम्मी फजर पढ़ रही होती हैं. I say salam to her and वो मेरे पे पढ़ के फूंकती हैं. That is happiness for me. So for me, I believe happiness is all around us. It sounds really dramatic and you know, very like क्या कहना चाहिए, बचकाना सी एक चीज़ लगती है. लेकिन it's all around us. And all we have to do is just acknowledge it, recognize it. You don't have to, you know, buy a huge house to be happy. You don't have to buy a big car to be happy. You don't have to buy certain clothes that will make you happy. The state of mind is what makes you happy. अगर आप अंदर से अगर आप खुश नहीं हैं, आप ना खुश रह सकते हैं, ना आप किसी और को खुश रख सकते हैं. And I think that is why they say the greatest thing that you can do is cultivate your own happiness. आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद को खुश कर लीजिए, आपके इर्द गिर्द सब लोग खुद ही खुशी हो जाएंगे. बिल्कुल. एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो अपनी खुशी मार रहे होते हैं. यू नो, बी इट मैन बी इट वुमेन. कमाने में इतना बिजी हो जाता है मर्द कि उसको टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का. या एक औरत बेचारी पूरा दिन इतना खपती है अपने बच्चे पालने के चक्कर में कि उसको और कोई चीज़ करने को वक्त नहीं मिलता या अपने लिए वक्त नहीं मिलता. तो आई थिंक कि हमारी ज़िंदगी अगर थोड़ी सी स्लो हो भी जाए ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. स्लो जिए, अच्छा जिए, खुश रहा करें, क्योंकि खुशी से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है. दैट्स वन थिंग जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है. वो ये सीखा है कि अगर आप खुश हैं ना अपने आप से और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो यू वॉन लाइफ. आई बिलीव दैट. आई थिंक दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. नवीन, आम तौर पे हमारी पॉडकास्ट के लिए हम कहते हैं ना कि some conversations are so special that we call them heart to hearts. But this one was definitely a soul to soul. So thank you for making time. And you know that investment that you're making in personal happiness and self-care, it shows. And thank you for being a brilliant example. मैं एक और बात सारों से कह रही थी कि यार this generation, our generation, we have smashed all stereotypes. कि वो सोच रहे थे ना कि जी 30 के हो जाएंगे तो ये नहीं होगा, शादी नहीं हुई तो ये होगा, शादी खत्म हो गई तो ये होगा. Look at us now. Who's having the last laugh? But thank you so much, Naveen. This was truly special, and I wish you all the very best. And I'm sure that people thoroughly enjoyed this side of you because you've kept mum for very long. लेकिन जब आप बोली हैं तो क्या बोली? Thank you for that. And with this conversation comes to a close, but the ultimate message was, please invest in your personal happiness. Take care of yourself and give yourself the love that you so readily and happily shower on others. सबसे ज़्यादा आप उसके मुस्तहिक हैं. इस conversation के बारे में क्या सोचते हैं? What are your comments, feedback? Please do send me. And of course, do also subscribe to the channel. Until next time, take care of yourself. Khuda Hafiz.